Hello. So, ladies and gentlemen, good evening. A very warm welcome to each and every one of you. Finally, the sun has risen on the finals of Kalangut Champions Trophy. Which team will take away the championship title with them and a cash prize of 1,55,000? All the questions will be answered as we are making our way towards the finals of this glorious, glamorous, prestigious Kalangut Champions Trophy. The hard work, the efforts, the perseverance of all the members of Awesome Boys Kalangut is finally coming into success today, as we are going to witness the mega finals right here in the heart of Kalangut. Which team will take it away? Will it be Sai Jai Bodgeshwar Bicholim, the man in yellow, or will it be the man in blue, Shri Bodgeshwar Bardesh? A lot of players have been sensational in this whole tournament. Samarth Gaus, brilliant display of brutal thrashing. The first man to complete 100 runs in the tournament, alongside Sai Zore. The brilliantly displayed batting and bowling. The shots by him completely unorthodox but still sweet to watch. And today, we all are familiar with the name Rajat Kudalkar, but even today, Rajat showed a glimpse of his strength in the much important semi-finals. And now, all the past incidents don't matter. All that matters is only what you do now. Sai Zore on strike. To accompany him, it's Samarth Gaus and Rohan Sagavkar to bowl the first over. Very first delivery to Sai Zore, and it's a dot delivery. Rohan Sagavkar, a cash prize of 3 wickets in a single over of rupees 500. And while batting, 3 sixes, and a cash prize is received from Mr. Nikhil Devshekar. And oh no, trouble for Sai Zore. He has to depart. What a wicket this has been. The celebrations, the cheers in the dugout of Jai Bodgeshwar Bardesh. They know they have done it. They have sent back the important factor of their opponents. Sai Zore is being sent back without opening his account. First man goes down. DJ. Sai Zore, one of the crucial factors of the team of Sai Jai Bodgeshwar Bicholim, but this time they have to fall back. And now Manoj Narvekar, one of the most experienced players in the whole of Goan state, has represented the state for a long time, but against it, it's the man, the whiz of bowling, Rohan Sagavkar. Here he goes. Comes down the ground, trying to smack the ball hard, but this time he will get only a single from there. Rohan Sagavkar, a cash prize of rupees 1,000, surely for 3 wickets. And while batting, 2,000 if he hits 3 sixes. So a lot of cash prizes here. And the courtesy of our guest, Mr. Nikhil Devshekar, sir. And if he takes a continuous wicket hat-trick, 2,000 from Mr. Rupesh Desai. Samarth Gaus plays it safely. He knows his partner has gone early. And if we speak about the partnership of Sai Zore and Samarth Gaus, it's about 180 runs combined. So this shows what sort of partnership they have done for their team.
Samartha Gao surrounding a reverse sweep this time, but uncertainty up there. Oh no, there's a misfield in the backward region by Sanam Sagaukar, and because of that, yet again a bad throw. Oh no, all things are not going by the side here for the team of Shri Dev Bodgeshwar Bardes. Surely this was a dot delivery, but because of some mishaps, because of some mistakes there by Sanam Sagaukar, they had to pay. So here are the opening runs. 3 runs can be seen from the bat. Samartha Gao opens the count this time, and 3 runs aggregate on the tally. And this time it's a wide. Yes, says the umpire, you have to bowl it again. In this encounter, what will be the target here? They have decided to bowl against the setting sun. Won't be that easy in the coming time to bat, but still, this team is full of champion players. Trying to go inside out this time. I will really say the team of Shri Dev Bodgeshwar Bardesh have really done their homework on all the players. They knew that Sai Zore loves to bat on the upper side, and because of that, even this time he was trying to go through the leg side, and he pays for it. Samartha Gao is struggling in the initial stages. Let's see what happens next year in the coming time. Scorecard has stopped on just 4 runs, and they have lost their crucial man Sai Zore back in the dugout. To Manoj Narvekar, the very first ball, he plays it down the leg side. Misfield occurred, thereby the fielder present at the mid-on region, Ron Sagaukar. Until the backup comes, a single has been taken. Looks like they are not trying to attempt any big shots, but surely big shots will come. Doesn't matter if they lose wickets. At last, it's the Superman of Goan cricket, representing Goa for a very long time. Man from Naveli has a huge amount of records to his name. Has done a lot of things that felt impossible in the ground of cricket, and he has to do it again. A very big shout there, very big shout. Doesn't matter if he has nicked it or not. Just look at the childlike enthusiasm of all the fielders. Even the wicketkeeper Rohit Kudarkar was interested in that. But still the umpire says no. This time it's through. It's through the offside. Will it be stopped? Will it be stopped? And this time, no, it won't. It pierces the gap at the offside, and through the covers, the ball goes for a boundary. Increment in the scorecard, it reaches 9. Exactly as I said, no matter how silent you keep him in the initial stages, Samartha Gao is a lion that can pounce anytime, that can roar loudly anytime, and his departure will be beneficial there. But still, this time at the leg side, trouble for Samarth, and yes, celebrations in the dugout of Shri Dev Bodgeshwar Bardesh, because they have got their man, the biggest obstacle in the way of victory. The Superman has been cleared out of that. Samartha Gao departs, and they're losing their second man, the total of 9. TJ.
If a hat trick is done, then surely from Mr. Kalpesh Naik, punch member of Girim, a cash prize of 500 will be rewarded. Only for Tushar. Sachit comes and trying to go down the ground, but unsuccessful. This we have very seen it rarely. The team of Bijolim is batting and they are scoring just 9 runs in the first 2 overs. A very rare incident in this tournament. Trying to go big this time, and yes, done and dusted. Second over comes to an end, and alongside 9 runs on the scorecard and 2 wickets down. As I said earlier, Osabos Kalangut are registering their name in this elite list of organizing tournaments here in Kalangut. The Kalangut Champions Trophy. All the efforts and hard work of Subodh Hadfadkar and company. We are witnessing this glamorous tournament here in the heart of Kalangut. And in the initial stages, the team of Bijolim is struggling. खूप कमी वेळा हे पाहायला मिळालंय की साई जयबोडगेश्वर बिचुलीम संघ पहिल्या 2 षटकात 30 धावांच्या आतमध्ये आहे, पण अखेरच्या क्षणी शेवटी ही फायनल आहे. इकडे कुठच्याही क्षणी काहीही घडू शकतं, कारण फायनल मॅचचा तणाव, हा दबाव थोडासा वेगळा आहे आणि त्या दबावाखाली नक्कीच साईश जोरे ज्याने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्या नावाचा डंका वाजवला, हा लवकर परतला. त्याला जोडीला अर्थात समर्थ गाव सुद्धा आता उर्वरित काम हे या दोघांना करायचंय. मनोज ऑन स्ट्राइक. पहिल्याच बॉलवर मोठा करण्याचा प्रयत्न. यॉर्कर लेंथचा बॉल आणि त्याचबरोबर डॉट डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा एक पारितोषिक आलंय नामदेव याला विकेट हॅट्रिक साठी रोख ₹1000 माननीय श्री कल्पेशजी नाईक याचकडून. This time he plays it safely. अतिशय सुरक्षितरित्या यावेळेस चेंडूला खेळला जातो. कॉल धोका धोका इकडे पत्करण्याचा प्रयत्न, पण अखेरच्या क्षणी नकारलं सुचितने अतिशय सुरेखरित्या आणि त्यामुळे दुसरी धाव घेण्याचा मनसुबा हा खंडित झाला. धाव संख्या पोहोचली आहे 10 धावांवर. सचित आणि मनोज ही जमलेली जोडी, एक चांगला पार चुंदण्याची इकडे आवश्यकता आहे, जेणेकरून येणाऱ्या बॅटर्सना थोडंसं चांगलं जाईल त्यांचं काम, जे हिटिंगचं काम आहे ते करण्यासाठी. नावं जर घ्यायची झाली तर अजूनही हर्षद मातोंडकर, लतीफ सारखे फलंदाज येणं बाकी, म्हणजे अजूनही चांगली डेप्थ आहे बॅटिंग लाईनअप मध्ये, जी एक मोठी धावसंख्या उभारण्यामध्ये एक आपलं योगदान देऊ शकतात. चेंडूला जाऊ देतोय, वाईडचा इशारा येतोय, पंचांची हात होत आहेत समांतर आणि त्याचबरोबर अतिरिक्त धावसंख्येनुसार धावसंख्या एवढे पोहोचते ती 11 या आकड्यावर. इकडे आता प्रत्येक 1 विकेटसाठी 1000चं पारितोषिक नामदेव साठी. पारितोषिकांची खैरात झाली आहे या मैदानावर. थोडासा चेंडूला लॉफ केलं होतं, अर्थात मिड ऑन वरून चेंडू गेला लॉंग ऑनला आणि त्याचबरोबर एक सिंगल. इकडे पूर्णपणे अभ्यास केला प्रत्येक बॅटरचा. रजत कुडाळकर आणि त्याचबरोबर पूर्ण टीमने अतिशय सुरेखरित्या प्रत्येक मॅचचे अनालिसिस केलं, अभ्यास केला, कुठला फलंदाज खेळतोय आणि अगदी त्याच चुकीच्या वीक पॉइंट्सवर घात केला जातोय सगळ्या बॅटर्सच्या. मनोज नार्वेकर यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू थोडासा खाली राहतो. यावेळेस बॉलची स्पीड जास्त होती पण तेवढा टप्पा अनुदान करू शकला नाही आणि त्यामुळे बीट झाला पुन्हा एकदा मनोज नार्वेकर. पहिलेचे 3 षटकं अतिशय सुरेख निघतायत. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा निष्फळी. पहिल्या 3 षटकामध्ये अतिशय जकडून ठेवलंय. लेग बायचा येतोय इशारा आणि त्याचबरोबर धावसंख्या याचबरोबर पुढे वधारली जाते ती 12 या आकड्यावर, 13 या आकड्यावर, माफ करा, 13 धाव फलकावर. थोडीशी केविलवाणी स्थिती ही पहिल्या 3 षटकांमध्ये.
येणाऱ्या 5 षटकात अर्थातच तोडफोड बॅटिंग व्हायला हवी, नाहीतर पुन्हा एकदा थोड्याशा संकटामध्ये असू शकेल बिचोलीम संघ. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. पहिल्या ओव्हरमध्ये रोहन साळगावकर, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये तुषार आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये नामदेव. वाखाडण्याजोगी कामगिरी, अतिशय सुरेख गोलंदाजी. पहिल्या षटकात निघाल्या मात्र 4 आणि तिसऱ्या षटकात जर विचार करायला गेला तर अर्थातच सुरेख अशा प्रकारची कामगिरी. 13 धावा हे धावफलकावर लावले जातात अद्यापपर्यंत. पहिल्या ओव्हरमध्ये होते 4 धावा, दुसऱ्या ओव्हर निघाले 5 धावा आणि एकंदरीत झाली धावसंख्या 9. आणि याचबरोबर तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 13 धावा आणि गडी गमावले ते 2 आतापर्यंत. 2 विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक येतंय आता नवीन गोलंदाज तुषारसाठी. आणि त्याचबरोबर भाऊ यासाठी पारितोषिक 500 रुपयाचं कॅच साठी फिल्डिंग होत असताना. तुषार ऑन हिज बॉलिंग मार्क. पहिला चेंडू पंचांकडे पाहिलं जरूर, पण पंच सांगतायत चेंडू खेळण्याजोगा होता. आणि अर्थातच चांगलं कार्य संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पंचांनी केले. मुन्ना दाभोलकर सर, अमेय नाईक आणि सिद्धेश शरंबलकर सर. यावेळेस ग्राउंड आणि सरळ हातामध्ये येतो वेदांगच्या. मिड ऑफला होता उभा आणि सरळ डाऊन द ट्रॅक मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये विकेट नंबर 3 गोज डाऊन. मनोज नार्वेकर या मॅच मध्ये स्वस्तात तंबूत परततायत. धावसंख्या रगडली जाते ती मात्र 13 या आकड्यावर आणि अजून एक गडी जातोय तंबूच्या आसऱ्याला. Team dominance. Harshad Matonkar on strike. Harshad comes and with a dot he welcomes him. Tushar taking a crucial wicket and this time it's a dot delivery. Tushar in his first over has conceded just 5 runs and 1 wicket, and in this over 2 dot deliveries. Harshad trying to go big this time into the gap and it has been stopped. That's brilliant attempt in the deep there. Has surely stopped a couple of runs for his team, and Harshad Matonkar gets off the mark straight away. And that's the applause here for the fielder. Brilliantly stopped. Scorecard moves on to 15. And this time Harshad Matonkar is giving out this big message. Doesn't matter how many wickets we lose, I am in no mood of stopping. And he delivers it with a bang. A big shot up and over the mid wicket, and it goes all the way for a 6. Scorecard moves on to 21 runs. The first 6 of this innings, that too in the 4th over, which is a very rare incident. Both of them, Saish and Samarth, completely destroying, completely dismantling each and every bowler that came in front of them. But today, the challenge was different. Trying to go big yet again, and done and dusted. The 4th over has been completed, and yes, the official confirmation. So after the completion of first 24 deliveries, the first 4 overs, the total has reached up towards 21 runs, and they are losing 3 crucial wickets.
Yes, Harshad Madhonkar is out there in the middle. He knows his responsibility. He's a player of big matches. He's a player of critical conditions. And he now has to make use of that. And it's the Kalangur Champions Trophy over, where all the fielders will be inside the 30-yard circle. That means it will be a big challenge here for the bowler. And if you say challenge, they are taking out their trump card. Rohan Sagavkar in the attack in this much crucial over. इस बार सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सी मारेगा से पार 6 रन के लिए। वापस खेल मैदान में चलेगा, फिर से एक बार अटैक किया, गेंद को गैप में खेला, गेंद को गेंद निकले लॉन्ग ऑफ कवर के बिल्कुल बीच में से अमृत वेल्ले का जब तक निकल पाएंगे ना आराम से वो दूसरा रन बनता हुआ मैदान पर। हर्षद जो कि सुपर स्ट्राइक पर। देखिए हालात थोड़े से बदले मैदान पर, इस समय पर रनों की संख्या में इजाफा बनना बहुत आवश्यक है। 80-90 तक टोटल होना चाहिए, जहां से एक मुकाबला बहुत काटेदार। 29 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा और लाइन दूर रखिए, ऑप्शन के ज्यादा बाहर रखिए, वाइड बॉल मैदान पर और वाइड के साथ टीम का स्कोर 30 पर। सचिन के बल्ले से निकला वो छक्का मैदान पर, ताबड़तोड़ हमला मैदान पर। पता है इस समय पर ये गेयर बदलने पड़ेंगे मैदान में। चूंकि वहां से लाइन से शायद थोड़ी सी नाराजी मैदान पर, पता था कि उनके पाले में गेंद थी, बल्ले पर आती तो वो छाप था मैदान पर। इस बीच मात्र वापस खेल मैदान में चलेगा मैच के दरमियान। फिर से इस बार ठोस प्रहार तो उतना नहीं, लेकिन आगे निकल चुके, शायद मौका था रन आउट करने का, लेकिन रन गति वहीं पर है। खेल चलता हो इस वक्त 5 ओवर, इसके बाद 18 गेंदें बची इस खेल में। 18 गेंदों पर 8 या 7 छक्के लगते ना, तब भी मुकाबला 80 तक पहुंचेगा, जो कि लड़ाई का मौका रहेगा मैदान पर। 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। बिल्कुल लाजवाब खेल मैदान पर, लाजवाब मुकाबला। और सचिन और इस वक्त दूसरा खिलाड़ी हर्षद मैदान पर, जो कि बल्लेबाजी कर इस मैदान पर। ओह, लेग स्टंप के बाहर है, वाइड बॉल है ये। 1 रन वाप अतिरिक्त खाते में निकलता हुआ। 37 टीम का स्कोर मैदान पर इस वक्त इस मैच के दरमियान, जो कि साई जय बोडगेश्वर बिचोलिम टीम पहले बैटिंग करी इस मैदान पर इस वक्त, और सी बोडगेश्वर बारदेश टीम जो कि बॉलिंग करती हुई। ऑफ टर्न के बाहर कट करने का प्रयास निचले हिस्से पर लगी, हालांकि रन नहीं वहां पर निकलेंगे। अच्छा स्पेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37 पर। हैट्रिक के लिए 2000 रुपए सामान्य रूपेश देसाई की तरफ से, 3 छक्के लगातार 1000 रुपए निखिल देवसेकर उनकी तरफ से मैदान पर लग चुके हैं। तो लगातार मौके सबको मिलेंगे इस मैदान में। 18 गेंदें अभी तक इस खेल में बची हुई इस मुकाबले में और टीम का स्कोर 37 मैदान पर। देखिए फर्क कितना रहेगा मैदान में। सेमीफाइनल का जब मुकाबला गणपति वारिस के सामने था, तब पहले 1 ओवर में लगभग 27 बने थे, लेकिन आज वही साइज जोर है। आज बहुत सस्ते में निकले मैदान पर, और इतने सस्ते में निकला टीम शायद फंस गई वहां पर, और उसके बाद का खेल बिल्कुल मैदान पर बचा हुआ। अब इस समय पर फाइनल के इस दौर में अभी तक श्री बोडगेश्वर बारदेश टीम ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है, 5 ओवर में 37 इस मैच में, जबकि 3 विकेट नुकसान के बाद।
कलंगुट चैंपियन ट्रॉफी किसके कब्जे में रहेगी, आने वाला पल, ये समय सब कुछ बयां कर देगा। सामने मैदान पर बड़ा खिलाड़ी ऑफ स्टंप के दूर से खेला शॉट को, हालांकि वेदांग वहां पर है, निशाना लगा तो ठीक है, अन्यथा एक रन वैसे ही निकल जाएगा। एक रन के साथ सचिन वापस पहुंचेंगे इस समय पर, जबकि स्ट्राइक पर, और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस समय पर, जबकि 38 रन पर सचिन स्ट्राइक पर रहेंगे। अमृत वेल्लेकर वापस मोर्चे पर, और चेंज अप पेस, गति परिवर्तन लेके तुलसी बाहर गई गेंद, वाइड बॉल का इशारा। तमाम दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे, आनंद उठा रहे, और पूरी सुबोध और उसकी पूरी टीम इस वक्त बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लाइनमैन की भूमिका में बहुत से लोग हैं उनके, और साथ साथ देखिए समर्थन डिकरा का सबसे बेहतरीन, और ये भी लाइन तुलसी बाहर रखिए, वाइड बॉल मैदान पर, एक अतिरिक्त खाते में और एक रन बनता हुआ। देखिए सभी दर्शक वहां पर बैठे मैच का लुत्फ उठा रहे, और उनमें से हमारे करीबी दोस्त डिकरा भी इस मैच का आनंद उठा रहे। बिल्कुल अच्छा विश्वास उनका। टीम का स्कोर इस वक्त जो कि पहुंचा 39 रन पर, मुकाबला बिल्कुल इस वक्त 40 रन पर पहुंचा। देखिए इस समय पर हालात ये बता रहा कि यहां से भी गेयर बदले जा सकते हैं मैदान पर। 2-4 शॉट अगर एक ओवर में लगे ना तो आप 80-90 तक पहुंच जाएंगे बैटिंग करते हुए। और ये लाइन देखिए थोड़ी सी बाहर निकलेगी, शायद क्या नतीजा होगा, अंपायर का इशारा क्या रहेगा, 22 के रूप में या फिर बिल्कुल 22 के रूप में छोड़ा वहां पर बल्लेबाज ने। हर्षद ऑन स्ट्राइक पर। देखिए काबिलियत इस खिलाड़ी के पास बहुत अच्छी है, काबिलियत बहुत इस खिलाड़ी के पास अच्छी है, लेकिन इस काबिलियत को आज इस मौके पर उतारना पड़ेगा। आज बैटिंग करनी पड़ेगी हर्षद मैदान पर, अगर अपने आप में फाइनल में प्रवेश हो चुका है, फाइनल ट्रॉफी अगर जीतनी है तो इस बल्लेबाजी को आज बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी सामने वालों को क्या खिलाड़ी है। और रिवर्स मारने का प्रयास यहाँ पर चूके लाइन से, हालांकि आधे रास्ते में बची रही है। वेदांग है यहाँ पर, और ये बैकअप टिक टाक, और ये आउट मैदान पर। के नुकसान के बाद टीम का स्कोर जो कि मैदान में पहुंचा 41 पर। कलंगुट चैंपियन ट्रॉफी हर साल की तरह इस साल कुछ और अलग सा किया। इस साल भाई प्राइस में भी बढ़ोतरी की, और खासकर पंचायत ने ये इस बार तालुका लेवल प्रतियोगिता, और लाइन देखिए थोड़ी सी और बाहर जा रही है, या फिर देखना पड़ेगा बिल्कुल लाइन उसी अंदाज के साथ। देखिए यहां से कभी कभी बताना आसान नहीं था हमें। धन्यवाद सुबोध, उसकी पूरी टीम का एक बड़ा लेवल यहां पर हो चुका है इस समय पर। सुबोध की पूरी टीम ने जो कार्य किया उस कार्य को सलाम। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट, सीमा रेखा से पार, 6 रन। मोहित जो कि यादव स्कोरिंग पर काम करते हुए, बेहतरीन स्कोरिंग लगातार 3 दिन मोहित का एक बेहतरीन कार्य मैदान पर, और इसके साथ ये खेल हर्षद वापस स्ट्राइक पर। और इस बार ऑन साइड पर ताकत लगी, लॉन्ग ऑन पर खेला, पहला रन बहुत तेज निकला, हल्की सी गड़बड़, लेकिन उस बात का उतना कोई असर नहीं, 1 रन वहां पर निकला। 1 रन के साथ खेल समाप्त हो चुका है 6 ओवर का। 6 ओवर के बाद 48 पर 4 विकेट नुकसान के बाद साई जय बोडगेश्वर बिचोलिम टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करी इस मैदान में। निखिल देवसेकर, प्रसाद जो के, और उनके साथ तीसरे हमारे बच गई रुपेश देसाई, सभी का हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। हमारे आज खास आकर्षक जो कि इस वक्त
में जो कि चीफ गेस्ट है वहां पर बैठ चुके, लगातार कुछ मैचेस देख रहे हैं। सर जी मुकाबला बहुत कड़क होगा, ये दावा रहेगा इस टीम का, क्योंकि सामने टीम भी ये जानती है, साई जय गणेश बोडगेश्वर बिचोलिम टीम के मुकाबले की ताकत है पूरी हर्षद पर, और हर्षद पे तो खड़ा है ना, सामने दीवार खड़ी है मैदान पर। पहला प्राइस लगभग 1.5 लाख, जो कि दूसरा जो कि 77,000 प्राइस, जो कि बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ भाई लेवल भी इस साल बड़ा, सुबोध और उसकी पूरी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी इस साल भाई। तालुका वाइज के मुकाबले हर मुकाबला कड़क, पहला जो मुकाबला सुबह हो ना, आखिरी क्षणों तक दिल दहला मुकाबला, क्या उसी अंदाज का यह मुकाबला रहेगा मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर सामने से नया गेंदबाज, जो कि देखिए 3 विकेटों के लिए लगभग 500 रुपए का इनाम मिलेगा। हैट्रिक विकेटों, हैट्रिक के लिए 3 छक्कों के लिए लगभग हैट्रिक विकेट 2000। ओ इस बार टाइमिंग उतना ठीक नहीं है, लेकिन रन मिलेगा एक ही मैदान पर। अब चले, अब वापस बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, मामला थोड़ा सा कड़क है ये। इस समय पर टीम का स्कोर जो कि पहुंचा ना 49 रन पर। इस बार बढ़िया लाइन मैदान पर डॉट गेंद निकलती हुई। देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है मैदान पर, रन चाहिए 80 85 90 तक पहुंचना पड़ेगा पहले बैटिंग करते हो। अभी तक जो कि मामला है ना, वो थोड़ा सा धीमा हो चुका है। एक खूबसूरत माहौल, खूबसूरत मुकाबला, दिलचस्प खेल मैदान पर। राइट हैंड ओवर विकेट से वापस ऑफ के बाद कवर पॉइंट पर हवा में रखा गया, टाइमिंग देखिए खूबसूरत, गेंद निकली, 1 बाउंड, सी मारेगा से पार, 4 रन के लिए। विकेट के लिए रुपेश देसाई की तरफ से लगभग 2000, 3 लगातार छक्के निखिल की तरफ से, जबकि 1000 रुपए का इनाम मैदान पर मिलेगा। और लाइन को थोड़ा सा दूर रखा, वाइड बॉल। टीम का स्कोर हुआ 54 रन मैदान पर 54 पर। देखिए अभी तक 2-3 शॉट की कमी रहेगी मैदान में, 2-4 शॉट अगर लगते जाएंगे ना, मुकाबला बिल्कुल आसान हो जाएगा बाद में गेंदबाजी करते हुए। लेकिन वेदांग ध्यान में रखना पड़ेगा पूरी टीम को। आज प्रवीण जो कि टीम में वगैरह खेल नहीं रहे, इंजर्ड है, तो आज उसकी कसर को पूरा करना पड़ेगा, उसकी कमी को मैदान पर। इस बार ऊपर चली गेंद, हवा में निकले गेंद, रजत है सामने। मैच में ये कैच आसान रहेगा इस खिलाड़ी के लिए, और ये आउट मैदान पर। मैदान पर अभी भी शायद इस वक्त क्या मुकाबला है, ये बिल्कुल दावेदारी का खेल। तमाम दर्शक जानते हैं कि टीम बहुत बड़ी है, ये टीम का रुतबा, इस टीम का बिल्कुल कद ऊंचा इस वक्त, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी खेल। लेकिन साथ साथ इस वक्त अविनाश कावस भी आज बहुत सस्ते में लौटे, जिस खिलाड़ी पर भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन निराश किया सबसे बड़े खिलाड़ी साइश ने मैदान पर। लतीफ मैदान पर, ताकतवर खिलाड़ी, विस्फोटक, विध्वंसक खिलाड़ी, नाम है लतीफ, काम बहुत इनका। चलिए बहुत तेज गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में, रन नहीं निकलेगी वहां से। एक बेहतरीन माहौल, खूबसूरत माहौल मैदान पर। तमाम दर्शक जानते हैं कि टीम का स्कोर 54 पर हो चुका है। यह और चल रहा है 7वां इस मैच का। क्या ये मुकाबला बहुत समझमा, और दूर से, शरीर के दूर से, और समाप्त हुआ 7वां। 7 ओवर के बाद 54 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मतलब तारीफ करनी पड़ेगी श्री बोडगेश्वर बारदेश टीम के सभी गेंदबाजों की, और ग्राउंड फील्डिंग की
बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर रखा, सामने वालों को अभी तक रोक के रखा। 6 गेंदें इस खेल में बची हुई मैदान पर। And once again, we would really like to express our gratitude to all the guests present here for giving your precious time to this tournament. Punch member of Parvavado, Agarwado and Shirodkar Life Insurance and Investment, respected Sir Prasad Shirodkar sir, alongside the main head of Black Mamba Security and BJP Youth Vice President of St. Andre Constituency, respected Sir Nikhil Devshekar sir, alongside Rupesh Desai sir. A very warm welcome to every one of you, and once again we are grateful to you for making your way towards this glorious tournament and making it a grand success. पहली गेंद शॉर्ट टर्म पल, हो उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। किया युवा लड़कों ने, सुबोध की पूरी टीम, उनका दोस्त, करीबी दोस्त मानव, मोहित, सभी का नाम हम जिक्र से लेंगे। खासकर मोहित का, जिन्होंने आज स्कोरिंग पर 3 दिन लगातार बेहतरीन कार्य किया मैदान पर, और मानव ने हर वो चीज जो कि बिल्कुल आसान कर दी जो मुश्किल थी बातें मैदान में। इनसाइड आउट, हवा में खेलने का प्रयास किया, टाइमिंग उतनी ठीक नहीं है, लेकिन गेंद निकल रही है, पॉइंट सीमा आने का बार गेंद को रोका जा रहा है, लेकिन 2 रन वहां से नहीं हो सकते, और 2 रन के साथ 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। 4 गेंदे बचे। मोहित यादव बिल्कुल अच्छे लाजवाब स्कोरर है, लगातार 3 दिन एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उसका करीबी दोस्त मानव और उसकी पूरी टीम उनका शुक्रगुजार रहेंगे। हर वक्त हर वो काम आसान बना दिया उन्होंने जो बहुत मुश्किल लग रहा था इस मैदान पर। लेकिन वापस 4 गेंदे बचे। टाइमिंग देखिए, सीधा हाथ में जा रही गेंद, उतनी दूरी प्राप्त अपने आप से नाराज रहेंगे शॉट के। ये शॉट बनना था इस मौके पर, विकेट निकला मैदान पर, और आखिरकार बड़ा खिलाड़ी आउट मैदान पर। 60 रन पर निकली और एक विकेट। अंतिम कुछ 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए 2 शॉट चाहिए मैदान पर, 70-75 एक अच्छा टोटल सामने से रहेगा मैदान पर। ये टोटल आसान नहीं होगा बाद में शाम के समय पर 8 ओवर के इस मुकाबले में, और इसके हम यही कहेंगे कि मुकाबला बहुत तगड़ा मैदान पर। सोमनाथ मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में, लाइन दूर रखिए, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन निकलता। 63 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बिल्कुल बेहतरीन माहौल, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। इस बार गेंद हवा में, शायद फंस गया खेल, सीधे खिलाड़ी की झोली में, और आउट। बिल्कुल बेहतरीन माहौल, लगातार बिल्कुल 5 दिन में ये पिच जो कि बनाई गई। सुबोध, उसकी पूरी टीम, खासकर मानव, सुबोध, उसकी पूरी टीम का धन्यवाद है। आसान बात नहीं थी, जब शुरू में पहले लगा भाई पिच थोड़ी सी गीली है, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छे सुखाया गया, और कम से कम दिनों में पिच को बनाकर आज ये प्रतियोगिता बिल्कुल आखिरी क्षणों में जा रही है मैदान पर। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उनकी पूरी टीम की, उनकी पूरी यूनिट की। डिकरा भी शायद उसमें विश्वास रखते हैं, और डिकरा भी कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ सुबोध और उसकी पूरी टीम कर सकती है। लेकिन घुमटेश्वर मडगांव टीम भी खुश रहेगी, लेकिन देखिए इतनी बड़ी टीम के साथ जब हम हारते ना तो उनकी गेम देखते हैं। और देखिए सामने वाली टीम को जब आपने इस समय पर 63 पर रोक के रखा है, इसका मतलब बिल्कुल घुमटेश्वर मडगांव टीम के साथ बहुत अच्छा खेली, ये तो लग रहा है अभी तक। उन्होंने 88 जो बनाए थे मैदान पर, और लेकिन अब ये मुकाबला फाइनल का, दबाव दोहरा रहेगा मैदान पर दोनों टीमों पर। ये अगर 70-75 भी बन जाते हैं ना तो मुकाबला आखिरी क्षणों तक लड़ाया जाएगा मैदान पर। ये विश्वास दोनों टीमों को, और यही विश्वास इस फाइनल के दौर में चलेगा मुकाबले में। शायद देखिए रजत कुडालकर ने क्या वो कैच लपका, या फिर बिल्कुल रनआउट का मौका, ये रनआउट का मौका और ये आउट मैदान पर हो जाएंगे।
देखिए ये 70 तक अगर पहुंचता है तो फाइनल के दौर में लड़ने के लिए एक अच्छा टोटल रहेगा सामने। 60-65 टोटल उतना बुरा नहीं है, लेकिन 70 लड़ने के लिए योग्य रहेगा इस मैदान पर। शरीर के दूर से खेलने का प्रयास किया, अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं है। इनिंग लगभग समाप्त हो चुकी है और टीम का स्कोर पहुंचा 63 रन पर। इस समय पर 8 ओवर के साथ तारीफ करनी पड़ेगी इस वक्त श्री बोडगेश्वर बारदेश टीम की। टॉस पहले जीता, कहा वो गेंदबाजी करना पसंद करेंगे इस 8 ओवर के मुकाबले में। इतनी बड़ी टीम जो अभी तक पूरे प्रतियोगिता में 2 बार 100 रन बना चुकी है, उस टीम को आपने 63 पर रोका, ये सबसे बेहतरीन बात मैदान पर। लेकिन रोका है, लेकिन इस रोकने से भी ज्यादा अच्छा इस मैच को अगर जीतना है तो वो मुकाबला बनाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर से साई जय गणेश जो कि बोडगेश्वर बिचोलियन टीम ये जानते हैं, उनके पास बॉलिंग अटैक सबसे बेहतरीन है, तो वो कार्य करेगी रोकने की मैदान पर। लेकिन चलते इस समय पर डीजे के पास 64 टू विन मैदान पर। मध्ये अर्थातच इकडे एक अटीतटीची इनिंग आपण पाहिली, ज्या एका संघाने तब्बल 2 वेळा या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 100 धावा कुठल्या होत्या, त्याच संघाला 63 62 या धावसंख्येवर लोकलं जात आहे आणि त्याचबरोबर अर्थातच 63 हे आव्हान दिलं जात आहे समोरच्या श्रीदेव बोडगेश्वर बारदेश संघाला। तर पाहायचं आहे का घडेल का बिघडेल, पण त्या अगोदर नक्कीच कौतुकास्पद कामगिरी या स्पर्धेची आयोजन कमिटी ऑसम बॉस कलंगूट या संपूर्ण मित्रमंडळाच्या अथांग परिश्रम आणि मेहनत यांच्या मार्फत ही स्पर्धा आयोजित केली जाते। जर विचार करायला गेला तर खूप कठीण असतं अशा प्रकारची स्पर्धा आयोजित करणं, कारण गेली 5 वर्ष एक सरळ दर्जा स्पर्धेचा होता, पण यावेळेस जर विचार केला तर तालुका लेवल पर्यंत म्हणजे तालुकाची मर्यादा या स्पर्धेमध्ये होती व तालुका लेवलचे प्रत्येक तालुक्यातील आपण चांगले खेळाडू पाहिले। गोवा राज्याचे बरेचसे तालुके इकडे या स्पर्धेमध्ये आले खेळण्यासाठी व सगळ्या खेळाडूंनी आपला खेळ इकडे दर्शवला व याचं कारण म्हणजे ती ही स्पर्धा। या संपूर्ण कमिटीमध्ये ज्यांनी महत्त्वपूर्ण कार्य केलं ते अर्थातच सुबोध, मानव, आझिम, राजेश, मुजामिल, मुत्तू आणि त्याचबरोबर मलिक आणि त्याचबरोबर अभि सुद्धा। या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळे, या सगळ्यांच्या परिश्रमामुळे, अहोरात्र परिश्रमामुळे आज ही स्पर्धा इकडे होते। आपण फक्त स्पर्धा पाहतो, पण त्या स्पर्धेसाठी किती दिवसांची मेहनत असते हे फक्त आयोजन कमिटीलाच माहिती असतं आणि ते कार्य त्यांनी सुरेखरित्या केलंय, त्याबद्दल त्यांचेही खूप खूप अभिनंदन। आणि त्यांच्या एवढ्या मेहनतीमुळे आज आपण ही स्पर्धा इकडे या भव्य दिवाणावर अनुभवतोय। त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी जे आम्हाला पंच लाभले होते, कुठच्याही स्पर्धेत पंचांची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण असते आणि ती महत्त्वपूर्ण भूमिका अतिशय सुरेखरित्या हाताळली आमचे 3 पंच मुन्ना दाभोलकर सर, अमेय नाईक सर आणि त्याचबरोबर सिद्धेश अरंबोलकर सर। आणि त्याचबरोबर समालोचन आम्ही करतो तर ते सोपं पडतं की कारण आमच्या बरोबर स्कोरर असतात आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अतिशय अव्वल स्कोरिंग केली ती मोहित यादव। आणि त्याचबरोबर ही स्पर्धा जरी कलंगूटमध्ये आहे तरी तुम्ही ही स्पर्धा 7 समुद्रापार पाहू शकता। याचं कारण म्हणजे गौरव सावंत त्यांची पूर्ण टीम tenniscricket.in या संपूर्ण स्पर्धेला लाभली टेनिस क्रिकेटची टीम, ते म्हणजे अनुभवी डिजिटल स्कोरर प्रशांत पवार आणि त्याचबरोबर एक सुंदर असं कॅमेरामॅन प्रीतम मस्कर, ज्याने या स्पर्धेचे सगळे आठवणी YouTube लाईव्ह मध्ये कॅप्चर केलेत। आणि त्याचबरोबर कमेंट्री बॉक्स मध्ये आरोंदा गावचा एक बुलंद आवाज कृष्णा देवजी आपण ऐकतो गेले 3 दिवस। आणि त्याचबरोबर मी दीप आरोंदेकर पुन्हा एकदा सर्वांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करतोय फायनलच्या दुसऱ्या इनिंग मध्ये, मेगा फायनल्स रोड टू चॅम्पियनशिप। आणि त्याचबरोबर वळूया दुसऱ्या इनिंग कडे। 63 धावांचा पाठलाग, 63 धावांचा बचाव करायचा आहे। कुठला संघ करेल बचाव आणि कुठला संघ करेल पाठलाग, करू शकेल का पाठलाग या मोठ्या टार्गेटचा की होईल बचाव या धावसंख्येचा? पाहायचंय काय घडेल का बिघडेल या मॅच मध्ये।
तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. 63 या धावसंख्येचा पाठलाग करण्याच्या उद्देशाने रजत कुडाळकर आणि त्याचबरोबर सनी नानोडकर ही सलामीची जोडी. तर दुसऱ्या बाजूने हर्षद मातोंडकर याची हातोपली जाते जबाबदारी. गोवा राज्याचे हे बरेचसे आयकॉन्स आज एकमेकांसमोर आपल्या तालुक्याच्या टीमसाठी इकडे खेळताना दिसत आहेत. एक संघ असेल चॅम्पियन या कलंगूट चॅम्पियन्स ट्रॉफी या स्पर्धेचा, तर तो कुठला असेल संघ? ओव्हर टू सेकंड इनिंग्स. पहिला बॉल रजत कुडाळकर आणि पहिल्याच बॉलवर अप अँड ओव्हर. पहिल्याच बॉलवर मारतोय चौकार आणि त्याचबरोबर करतोय स्वागत हर्षद मातोंडकरचं. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 3 असे फलंदाज होते ज्यांनी 100चा आकडा पार केला. समर्थ गावस, मतीन खान आणि त्याचबरोबर रजत कुडाळकर. गोव्याचा एक महत्वपूर्ण तारा सितारा चमकला या मैदानावर. आणि त्याचबरोबर निर्धाव चेंडू. हर्षद मातोंडकर सेमीफायनल मध्ये ती 27 धावांची खेळी, मात्र 9 धावांमध्ये आणि सर्कल ओव्हर मध्ये भेदक गोलंदाजी. सेमीफायनलच्या उत्कृष्ट दर्जाच्या खेळीमुळे आज हा संघ कुठे ना कुठेतरी फायनल पर्यंत पोहोचतोय. आणि त्याचबरोबर चेंडू थोडासा वेळ हवेत, पण आता मात्र थोडीशी मिसफिल्डिंग झाली आणि त्याचबरोबर क्विक सिंगल घेतली जाईल व त्या क्विक सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या पुढे वधारेल ती 5 धावांवर. Rajat Kudalkar having a cash prize of, if he completes a half century, ₹1,000 for him. But in the meanwhile, Sai Sore will take a catch and Sunny has to hold back. Rajat will have a cash prize of ₹1,000 for a half century by Mr. Kalpesh Naik, the punch member of Girim. In the meanwhile, a mishap has been occurred in the ground and Sunny has to fall back as the first man goes down, and it's Harshad finally getting the payback by sending back a crucial man. जर हा सामना 3 षटकात संपन्न केला रजत कुडाळकरने तर अभिप्रायकडून 11,000 रुपयाचं पारितोषिकांची आज खैरात लागली आहे रजतसाठी. कारण गोवा राज्याचा एक नामांकित सितारा आज यावर अखेरच्या क्षणी सेमी फायनल मध्ये जो चमकला आणि आपल्या संघापर्यंत घेऊन आला. बरेचसे तारे आपण पाहिले या मॅच मध्ये. आपण विकेटच्या पाठीमागे पाहतोय अविनाश गावस, त्याचबरोबर समर्थ गावस सुद्धा होता या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. साईश जोरे आणि त्याचबरोबर मनोज नार्वेकर अशा बऱ्याच प्रकारच्या आयकॉन्स आपण पाहिले या संपूर्ण टुर्नामेंट मध्ये. दरम्यान फलंदाज वेदांग होतोय सज्ज. पहिल्याच बॉलवर स्विच करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चालला बॅकवर्ड रिजनला आणि जोपर्यंत फील्ड केला जाईल थर्ड मॅन रिजनला तोपर्यंत बाय स्वरूपात एक धाव. आणि जर अपोनंट टीम कडे जर पाहिलं तर अर्थातच रजत कुडाळकर, आज रोहन सागर सुद्धा या टीम मध्ये, सनम सागावकर, अमृत वेर्लेकर सारखे बरेचसे दिग्गज सुद्धा या संघामध्ये सामील. दरम्यान धावसंख्या पोहोचली आहे ती 6 या आकड्यावर. स्लोवर डिलिव्हरी. यावेळेस हर्षदने पुरेपूर प्रयत्न केला रजतला चकवण्याचा, पण एक शेर तर दुसरा सवा शेर. जाणलं रजतने की हा चेंडू कदाचित आपल्याला फसवू शकतो, त्यामुळे चेंडूवर फक्त डिफेन्स केलं आणि एक क्विक सिंगल घेतला व स्ट्राईकला जवळ ठेवलं. आणि त्याचबरोबर षटकाची झाली आहे सांगता. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते ती 7 या आकड्यावर. मेगा फायनलचा थरार 63चा पाठलाग, 8 षटकांचा सामना, म्हणजे एक वेगळ्याच प्रकारची स्थिती या दोन्ही संघांसाठी. कुठचा संघ पोहोचेल त्या फायनलच्या ट्रॉफी पर्यंत
अर्थातच जर विचार करायला गेला तर बॉलिंग मध्ये आता कोणावर दिली जाते जबाबदारी, आणि ज्या प्रकारे इकडे दिसतंय कदाचित अविनाश गावस दिसतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. अविनाश गावस मॅन फ्रॉम नावेलिम. नावेलिम संघाचे 3 हुकमी एक्के समर्थ गावस, अविनाश गावस आणि गोपाळ गावस. जरी गोपाळ या स्पर्धेमध्ये खेळला नाही तरी सुद्धा मात्र अर्थात नावेलिमचे 2 दिग्गज खेळाडू आपल्या तालुक्यासाठी पुरेपूर योगदान देत आहेत आणि त्याच्याच हाती दिली जाते जबाबदारी या दुसऱ्या षटकाची. दुसऱ्या बाजूने काणका कॅनन रजत कुडाळकर असेल स्ट्रायकर्स एंडवर. पहिला चेंडू अतिशय वेगवान डायरेक्टली एट द रूट्स ऑफ द बॅटर. यॉर्कर्स लेंथ वर टाकलेला एक सुंदर चेंडू पूर्णपणे निशब्द करून ठेवतोय रजतला. स्वागत केलं जाते रजतचं विनाश कडून एका निर्धाव चेंडूने. धावसंख्या आपल्या नैसर्गिक जागेवर 7 धावांवर रखडली जाते. ऑफ साइडला गॅप मध्ये बॉलला ढकललंय, ड्राईव्ह केलंय आणि त्याचबरोबर मिळतील 4 धावा. रजत कुडाळकर थांबण्याच्या मूड मध्ये नाही. अर्थातच फायनलच्या मॅच मध्ये त्याची खेळ ही अतिशय महत्वपूर्ण असेल. धावसंख्या पोहोचते ती 11 धावांवर. अविनाश गावसचा एक चेंडू अर्थातच ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि त्याला योग्य रीतीने चांगलं शॉट सिलेक्शन आणि जाणलं की खूप मोठी गॅप आहे कव्हर पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हरला अगदी मधनं बॉलला ढकललं 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा डाऊन टाउन अप अँड ओव्हर. पंचांचा इशारा, दोन्ही हात आकाशाच्या दिशेकडे. अर्थातच इट्स अ कलंगूट चॅम्पियन्स ट्रॉफी मॅक्सिमम. ती 17 धावांवर 17 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. एक विकेट लवकर जरी हरवली तरी रजतने आपला फॉर्म सोडलेला नाही. बॉल यावेळेस हरकी स्थितीने इकडे ढकललं आणि त्याचबरोबर नॉस्ट्रेकर्सवर चुकीची फेकी, पण तरी समर्थ गावस होता बॅकअपसाठी, त्यामुळे क्विक सिंगल आणि त्याचबरोबर 1 धावेची धावसंख्या पुढे उधारली जाते. ती अर्थातच 18 या धावसंख्येवर. 18 धावा धाव फलकावर. अविनाश गावस आता नक्कीच परतीचा रस्ता पाहावा लागेल. कमबॅकचे दरवाजे उघडावे लागतील आपल्या संघासाठी. कुठे ना कुठेतरी तो दडपण, तो दबाव दिसतोय दोन्ही संघांवर. मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न अखेरच्या क्षणी एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय. वेदांत सुद्धा खूप ताकद ठेवतो मोठे फटके मारण्यासाठी. त्यांनी त्याच्या ताकदीचा एक ट्रेलर दाखवला होता सेमी फायनलच्या मॅच मध्ये. आता पूर्ण पिक्चर दाखवण्याची आता फक्त वेळ आहे, कारण यानंतर काहीच नाही. इट्स द एंड गेम, इट्स द फायनल. आयज ऑन द प्राइज. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज अविनाश गावस. लेग साइडला बॉलला पुन्हा एकदा फक्त दिशा दिली आणि जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची गणना. याचबरोबर 2 षटकांचा कोटा होतोय समाप्त व 2 षटकांच्या खेळानंतर सांघिक धाव संख्या ही वधारली जाते, ते अर्थात 18 धावांवर. जर विचार केला या मॅचचा तर जे 2 संघ खेळतायत अर्थातच एका बाजूने साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम आणि त्याचबरोबर श्रीदेव बोडगेश्वर बारदेश. दोन्ही संघांचे रंग जरी वेगळे असले, दोन्ही संघांचे खेळाडू जरी वेगळे असले तरी एक नाव मात्र हे कायम, श्रीदेव बोडगेश्वर. आणि नक्की श्रीदेव बोडगेश्वराच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या मेहनतीने व या सगळ्या खेळाडूंच्या परिश्रमांनी आज खेळाडूंपर्यंत पोहोचलेत. पण कुठला तरी एक संघ आज नमस्कार करेल या फायनलच्या मॅचला. कुठलातरी एक संघ घेऊन जाईल आपल्या सोबत फक्त कॅश प्राइज नाही, फक्त ट्रॉफी नाही, तर टायटल घेऊन जाईल कलंगूट चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं. तर तो कुठला संघ असेल? पहिल्या 2 षटकात तर अद्यापर्यंत ही गोष्ट धावसंख्या 18 आणि ज्यामध्ये 1 गडी गमावलाय. रोहित कुडाळकरच्या बॅटमधनं 2 चौकार 1 षटकार. So now
The stun gun Sai Zore comes on his bowling mark, and he will bowl his first delivery to Rajat Kudalkar. The third over will be in progress from the far end. This time ball goes high in the air. Take the catch, grab the match, but no. Avinash goes for shot, and in the end, you can't stop the ball from reaching the boundary if it has come from the bat of Rajat Kudalkar. Once again, a boundary comes out from his bat. Scorecard moves on to 22. Rajat Kudalkar, it has been a dream season for him. A century at the prestigious Rameshwar Radishtan Mid-Bow Championship. In every tournament that he played, he has grabbed most of the runs. Man from Kanka, the Kanka cannon Rajat Kudalkar, because every ball that touches his bat goes out like a cannonball out from a cannon, and he is doing the same job that he does best. Trying to go big this time, but he misses it. Sai Zore. Sai Zore has done a really hard work, and he has took his name in the list of the all-rounders of Goa. He has been added to that list in the past few years. This time he smokes it through the offer side at the extra region. Harshad Malhotra on the screen. And this time a single, and with a double, in fact. Rajat said, let's take a double, and Vedang says, yes, let's take it. Scorecard moves on to a total of 24. This time a sweet spot, sweet sound, melody of the connection, and bang on. Downtown the ball goes, up and over the long on region for a maximum. This time the scorecard moves on to 30. On the scorecard. Once again and alongside, Rajat Kudalkar completes 150 runs in the tournament. The first player to do so. This time he goes at the other side. Harshad Matondkar will just watch the ball bouncing in front of him and going all the way, going the distance for a boundary. Harshad Matondkar will be having a very big responsibility in the coming time to bowl the fourth over. But Rajat Kudalkar, he's batting so well, it looks like batting is a piece of cake. Yes, safe cricket, safe and sound. He knows the runs have encountered, the runs are coming, so no need to hit each and every ball for that big shot. And let's take a single, keep the strike to ourselves, and let's welcome the next bowler. So after completion of 3 overs, it's 35. More runs to win from the coming 30 deliveries, so it will be less than a run a ball situation here. We were thinking that this match will surely be a thrilling one, but Rajat Kudalkar says no, he is in a hurry to finish this match. A lot of things went wrong here for the team of Bicholim. Sai Zore going early out of the ground, joined by Samartha Gauss, and after that the team was completely dismantled, but still they have their fair chances. 29 runs and 30 deliveries can be a lot sometimes. Let's see what can Harshad do. You're in the much crucial over. And this time it's a dot. Harshad Matondkar, the MVP of Bicholim. No matter what the situation, he has turned the tables for his side,
and will be looking forward to it in this match also, because he knows it's the end game. Each and every step will be crucial here. Chance, take the catch, grab the match, fielder beneath that, and he takes it. Yes, finally they are getting rid of the obstacle that was in front of them. Rajat Kudakar is being sent back. As I said, the MVP, doesn't matter what the situation, he always does best, and Harshad Matondkar strikes again. One more man goes at 35. This is the crucial over of Rajat Kudakar, and he has scored a total number of 34 runs from 16 deliveries, 2 sixes, alongside 4 boundaries there. And also Rajat becomes the first batter to complete 150 runs in the tournament. I am sure he will be welcomed with applause, he will be welcomed with claps. He has done the half job, and the remaining part of this match must be done by Amrut Werlekar, who went to replace him. And it's a lawful toss. It's over. Avinash Gauss will only watch the ball. 4 runs. What a way to get off the mark, Amrut Werlekar. Wasting no time. Gets to the job straight away in the very first ball. Scoreboard moves on to 39. There must be something done here, because they are well strong in this match. And what a brilliant shot that is! He showed what power that he possessed in that shot. Amrut was just flexing his strength in that. You can watch it over and over again. And it's a brilliantly executed slog sweep this time. So scorecard now moves on to 45. They are coming near and near with each and every big shot here. And this time, oh no, what have the fielder done? Doesn't matter in form of byes, all they care is those 4 runs. So now the equation, the scorecard becomes a total of 49, and they need just 14 more runs to win. And this time he goes up, and equation will be reduced. So now to win, it will be another 10 more runs to win. A bit of correction, another 11 runs to win here for the side of Bangladesh from the coming 24 deliveries. The initial stages of the final, things didn't go well for Petroleum, and in the dying moments, they are not going well for them. The dominators of the game, the dominators of the tournament are being dominated by the side of Bangladesh. Rudresh the ball this time, and it's into the gap. Oh no, that's brilliantly fielded there. That's a brilliantly executed field position there. Could have been a boundary. Rudresh the bowler. Scorecard becomes a total of 54. 54 runs can be seen on the tally. Looking for a reverse sweep, but not this time.
Another 10 runs required. 54 runs on the scorecard. They have ample of balls to go. Trying to go big yet again. Is there anything left? Surely Amrut Verlekar got off to a good start here, but this time he's conceding some dot balls. Doesn't matter. I don't think that there will be any impact on the batting side. And in conclusion, the tournament becomes a grand success here. A lot of big names, a lot of big players, big teams about of this tournament. And in the finals, Bangladesh dominates completely. And now they are just 9 runs away from a big win. In the form of leg byes, doesn't matter if it is in the form of leg byes. And in the first innings, Harshad Matodkar did what he does best. 25 runs from his bat. But remaining batters couldn't contribute, and because of that, a low target on the score. And this time, Wedang breaks the silence. He wants to go home early. He wants to finish the match early. And now the scorecard, this time it becomes at the total, as we can see on the scorecard, 61. And now only 3 more runs to win. The team of Shri Deo Bodgeshwar Bangladesh is feeling all the rush in their veins. And this time it's true. Ladies and gentlemen, presenting to you the champions of Kalangut Champions Trophy Season 6, Men in Blue, Shri Deo Bodgeshwar Bangladesh. In a one-sided encounter, they have completely dismantled the strongest side in the whole tournament, and they have finally carved their name on the prize. So we are going to begin the prize distribution very shortly, but until then, let's hear the music from our DJ and let the team celebrate.